Hello, wonderful brains. Here, your friend Aprajita is back with a new chapter from your English Reader Class 5, Language Odyssey by Amit Publishing House. So, children, let's start with the chapter number 12. And the chapter is A Visit to Kerala. So, Kerala is a state, as you all must have heard about Kerala. सबने सुना होगा केरला एक स्टेट है हमारा इंडिया का. तो केरला में किसने विजिट किया, कौन गया केरला विजिट करने? Let's see in this chapter about the story as we usually do. First we'll read about the story, what's there in this story. Kerala is a very beautiful state of India. इंडिया का बहुत ही सुंदर स्टेट है. It is full of wonderful and amazing natural sceneries. बहुत सुंदर सुंदर sceneries हैं केरला में. Maybe many of you must have visited Kerala also. The language spoken is Malayalam. वहाँ जो language बोली जाती है, जो लोग आपस में generally जो local language है, वो है Malayalam. Read this chapter and enjoy the beauty and grace of Kerala. तो इस चैप्टर में हम केरला की ब्यूटी और ग्रेस के बारे में पढ़ें. Onam is the most important festival of Kerala. Kerala is a southern state of India. इंडिया के southern most part में southern state है इंडिया का, और ओणम जो है वो वहाँ का main festival, बहुत important festival. It is flanked by the Indian Ocean on its west. केरला के वेस्ट में इंडियन ओशन एज्ड, बिल्कुल एज्ड है, टच करता है. केरला इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, लश एंड ग्रीन थ्रूआउट द ईयर. पूरे साल केरला में हरियाली दिखाई देती है. द बैक वाटर्स फ्रिंज्ड विद टॉल एंड एलिगेंट coconut palms add to Kerala's scenic beauty. Backwaters. What are backwaters? A part of water, मेन जो वाटर का स्ट्रीम होता है उसमें से कुछ पार्ट जो कट के अलग से बहता है, those are known as backwaters. And fringed means provide with a fringe. और उसके साइड में लंबे लंबे बहुत सुंदर कोकोनट ट्रीज भी हैं. According to the Hindu lunar calendar, the festival of Onam falls in Shravan Bhadrapad, that's around August-September. August-September में ये जो ओणम फेस्टिवल है ये आता है, और हिंदी जो कैलेंडर है हमारा हिंदू कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग वो श्रावण मास में भाद्रपद में ये ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है. Nature is at its best during these months. अगस्त-सितंबर का जो टाइम होता है उस टाइम पे केरला में बहुत सुंदर सीनिक व्यू देखने को मिलता है. नेचर अपने बिल्कुल बेस्ट सीन में होती है. The rains are its best during these months. और इस टाइम पे इन मंथ्स में रेन्स भी बहुत होती है. Till the rains are over, the tree look washed and clean, and there is greenery all around. आपने देखा होगा जब रेन्स के बाद, यहाँ भी जब हमारे रेन्स होती है तो रेन्स के बाद कैसे लगते हैं ट्रीज, जैसे धुल गए हों, बहुत अच्छे साफ सुथरे दिखते हैं. लाइक दैट आफ्टर द रेन्स देयर आल्सो एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी. तो और वो धुलने के बाद और साफ हो जाते हैं और ब्यूटीफुल लगते हैं. नाउ द डेज आर ब्राइट एंड सनी एंड द एयर इज कूल एंड रिफ्रेशिंग. जो डेज हैं वो ब्राइट होते हैं, जब सन निकलता है ब्राइट होते हैं और सनी होते हैं, रिफ्रेशिंग होते हैं वहाँ, because the air is very fresh. The granaries are full with the freshly harvested paddy. Harvested paddy. What do you mean by harvested paddy? Harvested is cutting and gathering, और paddy is rice. Rice को बोलते हैं paddy. Paddy को जब काटा जाता है, काट के उसको ग्रेनरीज में इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है. It is a time for celebration. It is time for Onam. ओणम मनाया ही जाता है उस जो कटाई होती है राइस की, जो राइस
स्टोर किया जाता है, उसकी खुशी में दैट इज द सेलिब्रेशन एंड दैट्स व्हाई ओणम इज सेलिब्रेटेड. Preparations for the 10-day long festivities begin well in advance. ये जो ओणम मनाया जाता है that is celebrated for 10 days and इसकी तैयारी एडवांस में ही शुरू की जाती है. People clean their homes and plaster their courtyards with cow dungs. Cow dung से, गाय के गोबर से अपने courtyards को प्लास्टर करते हैं, लगाते हैं cow dung and they clean their homes. They place 2 little mounds of King Bali and Vishnu, their premier gods. King Bali और Vishnu उनके main gods. Women and children gather flowers for making designs called rangoli on the floor. Now, हम लोग दिवाली पे रंगोली बनाते हैं ना, यहाँ जब दिवाली मनाई जाती है तो रंगोली बनती है, तो वहाँ भी जब रंगोली बनाते हैं केरला में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, they make rangoli with flowers. Their floral rangoli is done at the entrance of every home to welcome the gods, hoping that they will give happiness to them. वो हर दरवाजे के बाहर एक फूलों की रंगोली बनी हुई होती है गॉड्स का, लॉर्ड बाली और लॉर्ड विष्णु का वेलकम करने के लिए. A family puja is held and prayers are offered. Every member of the family gets new clothes and gifts. फैमिली पूजा, घर में पूजा रखी जाती है और सभी के लिए नए नए क्लोथ्स और गिफ्ट्स आते हैं. This is followed by a lavish feast. Lavish means rich. बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं with traditional sweets. और जो वहाँ के ट्रेडिशनल स्वीट्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं, मिठाई. Besides the family functions, there are social functions as well. Performances of the classical dance of Kerela, Kathakali are held. अब फैमिली फंक्शंस भी होते हैं, प्लस सब लोग इकट्ठा मिलके भी फंक्शन करते हैं, सोशल फंक्शंस भी होते हैं. एंड द क्लासिकल डांस ऑफ केरला जो कथकली है वो भी यहाँ पे किया जाता है. Masked Kathakali dancers enact mythological stories to the accompaniment of ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. वहाँ ट्रेडिशनल जब कथकली डांस परफॉर्म किया जाता है उसमें बड़े बड़े मास्क लगाए जाते हैं एंड दे परफॉर्म ऑन द कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं, accompanied by the traditional instruments. Sporting events are also held. कुछ स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. The most exciting of these is the snake boat race. Snake boat race भी ऑर्गेनाइज किया जाता है. Long slim boats race through the backwaters. जो backwaters होते हैं मेन स्ट्रीम में नहीं, मेन स्ट्रीम से जो कट के अलग वाटर्स फ्लो करता है वहाँ पे स्नेक बोट्स की रेस होती है. They are slim boats, पतले पतले बोट्स होते हैं स्नेक की शेप में एंड बैकवाटर्स में उनकी रेस होती है. Hundreds of spectators throng to watch this race. बहुत सारे लोग इस रेस को देखने जाते हैं. Besides being a celebration for a rich harvest, Onam also has a myth behind it. Myth means एक belief है, लोगों का एक भरोसा है, एक और belief है लोगों का. What is that? ओणम एक तो मनाया जाता है रिच हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने की खुशी में, और दूसरा myth क्या है? Why are Mahabali and Vishnu worshipped? महाबली और विष्णु को ही क्यों पूजा जाता है? King Bali was the king. There's a story behind it. एक story है इसके पीछे. King Bali was the king of Kerala. He was a great ruler, a just and kind king. King Bali बहुत दयालु राजा थे केरला. His subjects were very happy. सब लोग उनसे बहुत खुश थे. Indra, the king of the Devas, was not happy with King Bali's popularity. जो देव इंद्र हैं वो किंग बाली से खुश नहीं थे, उनकी पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थे. वो इतने फेमस थे किंग बाली कि इंद्र को अच्छा नहीं लगता. He feared losing his throne to King Bali.
अब लॉर्ड इंद्र को डर था कि वो अपनी गद्दी खो देंगे किंग बाली की इतनी पॉपुलैरिटी देख। He sought Lord Vishnu's help to destroy King Bali. अब इंद्र ने किसकी मदद ली? लॉर्ड विष्णु की। किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? किंग बाली। लॉर्ड विष्णु अग्रीड। लॉर्ड विष्णु मान गए, इंद्र की बात मान गए। Lord Vishnu took the form of Brahmin dwarf called Vamana and went to the court of King Bali. अब लॉर्ड विष्णु ने क्या किया? लॉर्ड विष्णु ने इंद्र को बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने एक बौने का रूप धारण किया, बौना ब्राह्मण, उनका नाम क्या था? वामना, और किंग बाली के कोर्ट में गए। Seeing a holy man, King Bali welcomed Vamana. उन्होंने देखा एक ब्राह्मण आया है उनके कोर्ट में, उनकी राजसभा में, तो उन्होंने उनका वेलकम किया। Vamana said, I have heard your praises far and wide. I am told you are a friend of the poor. मैंने आपके चर्चे बहुत सुने हैं, दूर दूर तक आपके चर्चे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि आप गरीबों की मदद करते हैं। What is your wish, Vamana? Said King Bali. I shall do whatever I can to help you. अब वामना से किंग बाली ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ। अब मैं जितना भी कर पाऊंगा मैं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजन, my needs are few. All I want is a piece of land as much as I can cover in 3 steps. अब क्या बोले वामना? वामना कौन थे? वामना वॉज लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु बौने का रूप धारण करके आए थे। तो उन्होंने बोला कि राजन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे उतना लैंड चाहिए, उतनी धरती चाहिए जितने की मैं अपने 3 स्टेप्स में कवर कर लूं। मेरे 3 स्टेप्स में जितनी धरती मैं कवर कर सकता हूँ उतनी धरती मुझे चाहिए। Is that all? Questioned King Bali. Your wish will be granted. अब किंग बाली ने बोला बस इतना सा विश है आपका, तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। But what will you do with such a tiny bit of land? क्योंकि तो बौने छोटे से थे, तो किंग बाली ने सोचा कि तो इतने छोटे से इनके 3 स्टेप्स में तो बहुत छोटी सी जमीन आएगी। तो उन्होंने वामना से पूछा कि आप इतने छोटे से लैंड का क्या करेंगे? वामना only smiled. वो केवल मुस्कुराए। Soon he started growing in size. धीरे धीरे वो बड़े होने, उनका साइज बढ़ने लगा। He grew and grew. He grew until he was as big as the universe itself. जितना ये बड़ा ये यूनिवर्स है उतने बड़े वो होते चले। In 2 steps he covered the entire earth and heaven. लॉर्ड विष्णु, क्योंकि वो लॉर्ड विष्णु थे, उनके 2 स्टेप्स में ही उन्होंने वो अर्थ और हेवन दोनों कवर कर लिए। लेकिन उन्होंने तो मांगा था 3 स्टेप्स के लिए। Where should I put my 3rd step? Now that I have covered the heaven and the earth, asked Vamana. अब वामना ने पूछा कि मैंने 2 स्टेप तो ले लिए, 2 स्टेप में मैंने पूरी धरती और स्वर्ग भी कवर कर लिया, अब तीसरा स्टेप में कहाँ रखूं? King Bali realized that it was Vishnu who stood before him. King Bali को समझ में आ गया कि ये जो सामने वामना खड़े हैं ये और कोई नहीं, लॉर्ड विष्णु है। Take your 3rd step, but he could not go back on his word. अब जो प्रॉमिस दे दिया था किंग बाली ने, दे दिया था कि 3 स्टेप में जितना लैंड आएगा, जितनी धरती आएगी उतनी वो देंगे। तीसरा स्टेप कहाँ रखें? Take your 3rd step and place your foot on my head, he said. किंग बाली ने अपना सिर उनके सामने रख दिया और बोले कि आप अपना तीसरा स्टेप मेरे सिर के ऊपर रखिए। Vamana pushed King Bali's head down, down, down until it reached the patal or hell. Now, किंग बाली के ऊपर जब रखा वामना ने पैर, तो वो नीचे 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 पाताल तक चले गए।
Pleased with Bali, he said, I can grant you one wish. वो बाली से, राजा बाली से इतने प्रसन्न हुए लॉर्ड विष्णु कि उन्होंने कहा, मैं आपको एक विश पूरी कर सकता हूँ, एक विश पूरी कर सकता हूँ. King Bali said, I only want to be allowed to visit my people once a year. किंग बाली बोले कि मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि मैं अपने लोगों से मिलने साल में एक बार जरूर आऊं. So the festival of Onam is also a welcome for King Bali by the grateful people of Kerala. तो ये मिथ था, ये स्टोरी थी. ओणम इसलिए मनाया जाता है कि वो अपने राजा बाली का वेलकम करते हैं. कहाँ के लोग? केरला के लोग. He visits his kingdom once every year at the time of Onam and the people receive him joyously. उनका मानना है कि ओणम के दिन राजा बाली आते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं. A festival song sung during Onam tells about the glory of King Bali's reign. जो गाना गाया जाता है ओणम पे, वो किंग बाली की ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स फेम, ऑनर, जो वो फेमस थे जिस चीज के लिए, उसकी गाथा कहता है वो सॉन्ग. An era of great peace, of justice and truth. राजा बाली ने जितने दिन राज किया, उतने दिन उनका राज जो था, बहुत लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो सच्चाई का साथ देते थे और जस्टिस करते थे सबके साथ. सी, जो थर्ड स्टेप लिया था उन्होंने किंग बाली के सिर के ऊपर, वामना ने, और दबते चले गए वो जब तक वो पाताल लोक में नहीं पहुंचे. Now, in a nutshell, what we have read in this lesson, the state of Kerala, its beauty and nature. हमने केरला के बारे में देखा कितना सुंदर है ये स्टेट और नेचुरल ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी क्या है. The regional harvest festival of Kerala, Onam. ओणम के बारे में भी जाना हमने. The story behind celebrating Onam, और ओणम क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या कहानी है, वो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा. Okay children, now the testing time. Take the correct options. Whatever we have read in the chapter, let's see what all is there in the exercises. Onam is the most important festival of this state. कौन सा स्टेट का important festival है? बिहार, केरला, गुजरात, असम. It's the important festival of Kerala. We have just read about Kerala. On its west, Kerala is flanked by Indian Ocean, Pacific Ocean, Dead Sea, Bay of Bengal. Kerala is edged by Indian Ocean. Who was the king of Kerala? The king of Kerala was King Bali. Now, Dash is the most, fill in the blanks. Dash is the most important festival of Kerala. What is the most important festival of Kerala, children? Onam is the most important festival of Kerala. People place two little mounds of, किसके mounds रखते हैं? दो छोटे छोटे, बाली and Vishnu. They place the mounds of Bali and Vishnu. Dash was the Asur king of Kerala. Who was the Asur king of Kerala? King Bali was the Asur king of Kerala. King Bali, seeing a holy man, welcomed whom? Who was that holy man? Welcomed Vamana. Welcomed Vamana. Fine. Now the last one. Onam tells us about the glory of King Bali's. King Bali की glory क्या? Glory of Bali's क्या? Bali का क्या था? Reign. R-E-I-G-N. जो उन्होंने राज किया था. An era of great peace. There was peace all over. P-E-A-C-E, peace. Then of justice, and what else? Truth and truth.
So, Onam tells about the glory of King Bali's reign, an era of great peace, of justice and truth. Now, write true, T for true, and F for false statements. Onam is a harvest festival. Is it a harvest festival? Yes, it is celebrated when the paddy is being harvested to celebrate that rich harvest. This Onam is celebrated. Onam is celebrated during the monsoons. Yes, during that time only, August, September, the monsoons are also there, the rains are there, so it's true. Onam is a festival to welcome King Bali. Yes, there is a myth also, a story about this, that King Bali visits once a year, and that's on Onam. So people celebrate Onam to welcome their king. This is also true. Onam is a festival celebrated by the Muslims of South India. No, this is false, children. Social functions are also held during Onam. Yes, the social functions are also held during Onam. True. Answer the following questions. Describe Kerala's natural beauty. It is a southern state of India. It's a very beautiful state. It is flanked by Indian Ocean in the west. The Indian Ocean touches in the west, and there are beautiful backwaters along with the tall coconut trees which bring a scenic beauty to Kerala. What preparations do people make for the festival? Which festival? Onam. What do? They clean their houses, they plaster their courtyards with cow dungs. They do it. Plaster करते हैं अपने courtyards को cow dung से. And what else they do? Women, they collect flowers, they gather flowers to make rangoli. The floral rangolis are made, and two mounds, little mounds of Bali and Vishnu are placed in the courtyard. Now next is, why do Kerala people place two mounds in their courtyard? Why do they place? They place two little mounds of Lord Vishnu and King Bali to celebrate, to welcome them, to welcome King Bali. They celebrate this Onam festival to welcome, to worship these two, one King Bali and other one Lord Vishnu. They worship them. That's why they place these two mounds of King Bali and Lord Vishnu to worship them. What are the social functions held during the festival? The social functions which are held during the Onam are, one is Kathakali, in which the masked dancers, they dance, and the other one is the snake boat race, which is being performed in the backyards. Many people go and visit this race. So these are some of the social functions which are held during Onam. Now the next question, who was King Bali? What kind of a king was he? King Bali was the king of Kerala, and he was a very truthful ruler. He was a great ruler and did justice and truth to the people. Why were King Bali and Lord Vishnu worshipped? Described in brief. Once Lord Indra was very much frightened by seeing King Bali's rule and how people loved King Bali. He was very afraid that his reign would be, that nobody would ask him, because the people loved King Bali very much. So he took help from Lord Indra, he took help from Lord Vishnu to destroy King Bali. And when Lord Vishnu took a form of a dwarf, Vamana, and went to King Bali's court, then there he asked King Bali
for a wish that he would like to take land of 3 steps. Wherever his 3 steps end, that much land he would like to take. And when he showed his when he grew and grew and grew, Vamana, and he took 2 steps were covered, the earth and the heaven were covered. Then he asked King Bali that where would he keep the 3rd step. And there the king put his head forward and said that you can put the 3rd step on my head. By seeing this, Lord Vishnu was very much happy by King Bali. And with King Bali, he was very much happy, and from then onwards, King Bali asked for a wish from Vishnu that I would like to come once a year and meet my people. So he fulfilled his wish, and from then King Bali and Vishnu are worshipped. People of Kerala, they joyously started worshipping both of them. Now children, match the following. Let's match these festivals. Some festivals are given here. The description of festivals are here, and the name of the festivals are this side. We have to match them. Festival of Lord Jagannath. In Puri, the festival of Lord Jagannath is known as famous by the name Rath Yatra. So, festival of Jagannath, Rath Yatra. Festival of Lights, Diwali. As we all know, the festival of lights is Diwali. The birth anniversary of Guru Nanak. The birth anniversary of Guru Nanak, Guru Purab. The celebration of love and duty between brothers and sisters. What is that? Raksha Bandhan. It's Raksha Bandhan here. Match it with Raksha Bandhan. Festival of Colors. Everybody knows which is the festival of colors? Holi is the festival of colors. Celebrated at the end of holy month of Ramzan. It is Eid al-Fitr. Festival in the month of April. What is the festival which is celebrated in the month of April, children? It's Baisakhi. Festival celebrated on 25th December. What's that? It's Christmas. 25th December, Christmas. The festival of Lord Shiva. It's Shivaratri. And the last one, Harvest Festival of Tamil Nadu. It's Pongal. The harvest festival of Tamil Nadu is Pongal. Okay, children? Now, let's move ahead. To make the meaning of a sentence more clear, punctuation is very important. Let's do some grammar now. Punctuation, you all must have read in your grammar also what are punctuations. To make the meaning of a sentence more clear. सेंटेंस के मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करने के लिए पंक्चुएशन का यूज किया जाता है. पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन इंग्लिश लैंग्वेज. Punctuation marks are used to begin or end the sentences. Sentence को begin, start करने के लिए और end करने के लिए punctuation are very necessary. Punctuation marks also tells us where to pause, stop or raise the tone of our voice while reading aloud. Punctuation marks हमें क्या क्या बताते हैं? कहाँ हमें start करना है, कहाँ पे stop करना है, कहाँ हमें पॉज लेना है, रुकना है, एंड कहाँ पे अपनी वॉइस को थोड़ा लाउड करना है बोलते हुए. जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक, वी हैव डिफरेंट टोन्स व्हाइल टॉकिंग. बात करने के डिफरेंट अलग अलग टोन्स होते हैं. कहीं पे हम स्लो, हमारी वॉइस स्लो हो जाती है, लो डाउन हो जाती है, कहीं पे हाई हो जाती है. तो पंक्चुएशंस हेल्प अस इन दिस. नाउ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स आर द फुल स्टॉप. दिस इज द साइन ऑफ फुल स्टॉप. The question mark, जब हम कभी किसी को क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, the question mark is there. The comma, this is comma,
Apostrophe, it's put up. The comma is put down and the apostrophe is put up. Capital letters. Capital letters are used for names. Proper nouns जो होते हैं उसके लिए use किए जाते हैं, and titles. They are also used to begin each sentence. कोई भी sentence start जब हम begin करते हैं उसका first letter जो होता है वो capital में लिखा जाता है. Punctuate the following paragraphs. The paragraph is given here. A paragraph is here. We have to punctuate it. इसमें हमें punctuation marks लगते हैं. Now children, it's not possible for me. मैं पूरा paragraph नहीं लिख सकती हूँ पर, but मैं corrections यहाँ करके दिखाऊंगी आपको. When you will do it in your notebook, आप पूरा paragraph फिर से correct करके लिखेंगे. Okay? आप मेरी तरह correction नहीं करेंगे. आपको क्या करना है? करेक्शन के साथ पूरा पैराग्राफ फिर से अपनी नोटबुक में लिखना है, बिकॉज आपकी नोटबुक में जगह है. यू हैव स्पेस इन योर नोटबुक. सो लेट्स स्टार्ट द पंक्चुएशन हियर. पैराग्राफ को ठीक से पंक्चुएट करें. Onam is the most important festival of Kerala. Onam, the first letter should be in capital. Onam. Fine. Is the most important festival of Kerala. Kerala, name of the state, K capital. Kerala. Okay, here full stop. एक full stop आएगा. फिर से जब केरला लिखेंगे तो capital Kerala. Is the southern state of India. India, proper noun. I-N-D-I-A, India. Indian, full stop. Of India, full stop. Then Indian Ocean, again Indian, I capital, Indian Ocean, O-C-E-A-N, Ocean, O capital, is to its south, S-O-U-T-H, and the Arabian, A capital, Arabian, S capital C, to its west, W capital, W-E-S-T. Full stop here, then again start K capital. Kerala is a beautiful state of lush and green throughout the year, comma, the backwaters fringed with tall and elegant coconut palms add to Kerala's apostrophe S scenic beauty. Full stop. Again here A capital. According to the Hindu, H capital, Hindu lunar calendar, the festival of Onam again O capital, falls in Shravanam, S capital, Shravan, Bhadrapad, B capital, Bhadrapad, comma, that is around August, A capital, A-U-G-U-S-T, August, and September, S capital, when we put a hyphen here. Fine. September. That is around August, September. Full stop. Now, nature, N capital. Nature is at its best during these months. Till the rains are over, the trees look washed and clean and there is greenery all around. Full stop is already there. So, these are some of the punctuations which have to be done. You have to punctuate the paragraph and rewrite it in your notebook. Now, answer the following questions orally. Why do different people have different qualities? Because we all individuals have something or the other characteristics. Some characteristics are same and some are different. Okay, so that's why everybody has different. If
we don't have different qualities, how would we recognize each other, that who is who? So everybody has a different quality in them. Do you envy other child's quality? Yes, we should we should respect the other children's quality too. If we have something good, the others too have something good in them. And if we have something bad in us, others also have something. The goods and the bads both go together in an individual. What is the capital of Kerala? The capital of Kerala is Thiruvananthapuram. It's Thiruvananthapuram. Fine. Here we complete our chapter, and I hope you all by now know the scenic beauty of Kerala. Some knowledge you must have gained with this chapter, from this chapter, how Kerala, the state of India, the southern state of India, it has a beautiful scenic view. It is a very beautiful state. It's worth visiting Kerala. So, here I end the chapter. Stay clamped for the next video. Till then, bye and stay happy, stay blessed.